Hello students, welcome back to TMI's home-based education. Moving further in this chapter, today we are going to start about addition of fractions, that is exercise 7.5. So in that, if you see, it is on page number 157. We have to write these fractions appropriately as addition or subtraction. इसमें addition हो रहा है, subtraction हो रहा है, according to that we have to say. So if we form the first fraction, एक shaded portion है, total how many are there? 1, 2, 3, 4 and 5. So it will become what? 1 upon 5. Now here it is 1, 2. It's shaded portion, so it will be 2 upon 5. Now is equal to, it is given 1, 2 and 3 is being shaded portion. So as like fractions are there, क्योंकि denominators same है. So 1 plus 2, if you will do it, it will become 3 upon 5. So here what will come? Plus will come. That 1 upon 5 plus 2 upon 5 is equal to 3 upon 5. Now here the whole parts are being shaded. So it is 1, 2, 3, 4 and 5 parts. So if you write 5 upon 5 or if you write 1, it will be same, but just to make it easy, we'll make it as 5 upon 5. Here it is 1, 2 and 3. So 3 upon 5. Here it is coming as 2. Means 5 में से 3 minus करेंगे तो कितना आएगा? 2 upon 5. So what here it will come? Minus sign. Same way here, 3 plus 3, 6, but 2 are shaded. So 2 upon 6. Here 3 are being shaded. So 3 upon 6. Here 1, 2, 3, 4 and 5 are shaded. It means 2 plus 3 is equal to 5 upon 6 is the answer. So this simple it is being given, and related to that, from question number 2 we have to do it in the notebook. So this you have to do it in the textbook with the help of pencil. Just we have to put the appropriate signs, that by adding or subtracting the answer is coming like this. Okay, so let us move to the question number 2 of this exercise. This is on next page number 158. Now in that, question number 2 is being given, that solve. So we have to solve. So fractions are being given. So we'll write the first one in that. It's 1 upon 18 plus 1 upon 18. Now we have to solve it. Now as when the fraction in the fraction, if the denominators are same, then it is the most easiest thing to add or subtract. So here as the denominators are same, what will take 18 as common. ये दोनों का denominator same है, that's we have taken 18 as common. 1 plus 1. Now 1 plus 1 is 2 upon 18. Now if you will see both of them, they are divisible by 2. So if we divide both by 2, it will come 2 1s are 2 and 2 9s are is 18. So the answer comes 1 upon 9. Okay, this you have to be very careful. अगर कट होता है तो करना ही है. अगर न्यूमरेटर बड़ा आता है, then you have to convert it into mixed fraction. That we'll see in the next coming sums also. Like second one is 8 upon 15 plus 3 upon 15. So again denominators are there same, means like fractions are there. So what we'll do, 15 will be taken as common. 8 plus 3, that is equal to 8 plus 3 is 11 upon 15 is the answer. Now here we cannot cancel it, because even 11 is already a prime number, 15 composite number है, दोनों कोई भी common table other than 1 किसी में भी नहीं आते. So this is the final answer. अब यहाँ पे हम इसको mixed fraction में भी convert नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है. मिक्स फ्रैक्शन कब होगा? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा.
Now third one, it is given 7 upon 7 minus 5 upon 7. So again 7 is common as denominator, and 7 minus 5 is equal to 2 upon 7 is the answer. Very simple sums have been given. Fourth one, it is given 1 upon 22 plus 21 upon 22. The same 1 plus 21 upon 22. Now 21 plus 21 plus 1 is, it comes to 22 upon 22. Now both are same, so both will be cancelled. 22 ones are 22 and 22 ones are 22. So answer will be 1. No need to write 1 upon 1 because 1 upon 1 is also 1. वो खास ध्यान रखना है, उसमें कुछ है नहीं. Now fifth one, sixth one, you can do it by yourself. And doing seventh one, 1 minus 2 upon 3, where it is given as 1 is equal to 3 upon 3. ये hint आपको दिया है. If it is not given, then also we can find out. Okay, but as here the hint is being given, so we'll use that hint only. That 1 is equal to क्या ले लेना है, 3 upon 3 minus 2 upon 3. ये 1 3 upon 3 क्यों गया है, बिकॉज ब्रैकेट में दिया है that 1 is equal to 3 upon 3. So now 3 minus 2 upon 3. So 3 minus 2 is 1 and 1 upon 3 will be the answer. Eighth one you have to do it by yourself. Ninth one I am doing. I'll do it here. Ninth one is given that 3 minus 12 upon 5. Now here see, दोनों में difference, here it is 1, तो 1 का value दिया, it is 3 upon 3. Now here only 3 is being given, so what we have to do, 3 के नीचे या कोई भी नंबर के नीचे जब कुछ भी नहीं होता है, only 3 or 5 or 10 anything is being written, it means it is having a denominator as 1. बट उसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए लिखते नहीं है. अदरवाइज इट इज़ 3 upon 1. If I write 5, so it is 5 upon 1. So now the denominators are different. So what we have to do, we have to find out the LCM. अब हमेशा याद रखना है कि LCM जब आप निकालो तो अगर एक नंबर प्राइम है, लाइक 5 इज़ अ प्राइम नंबर है, तो 1 और 5 का LCM जब आप निकालोगे तो LCM कितना आएगा, 5 ही आएगा. इट विल नॉट कम एनी अदर नंबर. अगर कोई प्राइम नंबर हुआ या कॉम्पोजिट नंबर हुआ, सामने 1 है बाजू में, तो LCM वो नंबर ही आएगा. नाउ जस्ट सी हियर प्रॉपरली, वैसे आपने सीखा हुआ है, जस्ट देन ऑल्सो पे अटेंशन. नाउ 3 upon 1 माइनस 12 upon 5. अब LCM हमारा क्या आया, 5. उसका मतलब डिनोमिनेटर में 5 करना है, अगर नहीं है तो. Now here it is only 1, यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो 1 को 5 कैसे कर सकते हैं. So 1 multiplied by 5, so 3 also multiplied by 5. नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया वही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. If you are multiplying here by 7, तो ऊपर भी 7, नीचे 10, तो ऊपर भी 10. Compulsory, this is the rule. Okay, so now it will become 3 5s are 15 upon 5 minus 12 upon 5. देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया. यार लाइक फ्रैक्शंस अभी तक हमने किया उसमें देखो सब में
like fractions are only given, means the denominators are same, then only we can add or subtract. So here also now we had made them as a like fraction, so now we can subtract 15 minus 12 upon 5 is being there. Now when you will subtract, 15 minus 12 is 3 upon 5 is the आंसर. सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें. यहाँ पे क्या था, खाली 3 था. 3 मीन्स इट इज 3/1. सो वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम. सो एलसीएम विल कम अस 5 ओनली. यहाँ पे तो 5 है, इसलिए वहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया. अगर करना है यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 1, बट नो नीड ऑफ इट. Here 1 to make 5 multiplied by 5. So here also multiplied by 5. Then 15 minus 12 is 3 and 3/5 is the answer. Now the next question, question number 3. Question number 3 is given in the form of a word problem that Shubham painted 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they together paint together? So wall was being painted by Shubham. Shubham ने कितना पेंट किया? 2/3 of the wall. उसकी सिस्टर माधवी had painted 1/3 of the wall. So दोनों ने मिल के कितना पेंट किया, that we have to find out. So what statement will be written? Space of wall painted by Shubham. That comes to 2/3. Now space of wall painted by Madhvi, that is 1/3. एक ही वॉल थी, उसका 2/3 पार्ट किसने पेंट किया? शुभम ने पेंट किया. और वही वॉल का 1/3 पार्ट किसने पेंट किया? माधवी ने. तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट टोटल they both painted. together. So दोनों ने मिलके टोटल कितना पेंट किया? सो फॉर दैट 2/3 प्लस 1/3 दोनों को ऐड करना है. नाउ वाज देयर like fraction, so 3 will be common. 2 plus 1. Now 2 plus 1 is 3/3. So if you will cancel, the answer will come 1. Means वो पूरी वॉल दोनों ने मिलके पेंट कर दी. So we can write therefore both had painted the whole wall together. क्योंकि 1 आ गया ना. 1 मीन्स वो एक ही वॉल थी, उसको जिसको पेंट करना था. तो शुभम ने 2/3 किया था, माधवी ने 1/3. मीन्स टोटल मिला के आंसर क्या आया हमें? 1. 1 मीन्स वो पूरी वॉल दोनों ने मिल के पेंट कर ली. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट बोथ हैड पेंटेड द होल वॉल टुगेदर. Simple questions are being there, just you have to read and understand it. मैथ्स में जब तक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नहीं समझोगे, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर. Now question number 4, find the missing fraction. Few of them I will do it, like 7/10 minus dash is equal to 3/10. तो देखो डिनोमिनेटर्स आर सेम. 7 में से क्या माइनस करोगे तो 3 आएगा. सो 7 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? आंसर 3. सो द आंसर विल बी
4/10. सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें. सेकेंड वन, डैश माइनस 3/21 इज इक्वल टू 5/20. अभी देखो 3 माइनस करना है तो आंसर 5 आएगा. तो क्या करेंगे, 5 में 3 ऐड कर दो. 5 + 3 इज 8/21 में से 3/21 माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5/21. सिंपल. थर्ड वन, it's dash dash minus 3/6 इज इक्वल टू 3/6. इसमें से 3/6 माइनस करेंगे तो आंसर भी 3/6. तो जस्ट ऐड देम. 3 + 3 इज 6/6 में से 3/6 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3/6. Now the last one I am leaving, that you have to do it by yourself. Question number 4. Now question number 5. That Javed was given 5/7 of a basket of oranges. What fraction of oranges was left in the basket? जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस. मतलब एक पूरी बास्केट थी ऑरेंजेस की, उसमें से जावेद को 5/7 ऑरेंजेस दे दिया. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो टोटल कितनी बास्केट थी? सो टोटल बास्केट ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू, बास्केट एक ही थी, दिया है ना, गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, तो मीन्स बास्केट एक थी. नाउ ऑरेंजेस गिवन टू जावेद इज इक्वल टू 5/7. बास्केट एक था, उसमें से जावेद को 5/7 दे दिया, तो therefore oranges left in the basket. अब वो बास्केट के अंदर कितने ऑरेंज बचे ना, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो बास्केट एक था, उसमें से जावेद को 5/7 दे दिया. अंडरस्टूड ना स्टूडेंट? बास्केट एक ही था ऑरेंज का, उसमें से 5/7 पार्ट जावेद को दे दिया. तो अब कितने ऑरेंजेस बाकी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो जैसे आगे भी आया था, किसी का डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 1. नाउ 7 and 1, the LCM will be what, 7. LCM is equal to 7. So now पहले ऐसे ही दूर दूर थोड़ा लिखना है भाई. सो यू कैन राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन नंबर इजीली. अभी 1 को 7 कैसे बनाएंगे? सो 1 7 ज़ा 7. सो हियर ऑल्सो 1 7 ज़ा, सो 7 1 ज़ा इज 7 and 7 1 ज़ा इज 7 minus 5/7. लाइक फ्रैक्शंस हो गए. नाउ वी जस्ट सब्ट्रैक्ट 7 minus 5/7, which comes to 2/7 oranges are left in the basket. अंडरस्टूड? बास्केट एक था, उसमें से 5/7 जावेद को दे दिया, तो बास्केट में कितने ऑरेंजेस बचे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो फ्रॉम 1 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5/7. सो अस we have to find out LCM, but here it is 7 and 7 and 1 LCM will be 7. Then we'll make the denominator as 7, so we are multiplying it by 7. तो ऊपर भी 7 से 7 1 ज़ा 7 and 7 1 ज़ा 7. 7 minus 5/7, which comes to 2/7. So at last you can write the statement that oranges left in the basket is 2/7. Therefore oranges left in the basket is equal to 2/7. Then so this was very easy exercise, your 7.5
5 based on addition of the like fraction, addition and subtraction. So I hope so there is no doubt in this now. The remaining sums of this you have to do it by yourself. In the next video we'll move further addition and subtraction of fraction where unlike fractions will be given. Okay. So till then, thank you and take care.